Hello, guys. Hope you are doing well. Welcome to United Bedtime Talks. I'm Udit. आज काफी कुछ डेवलपमेंट्स हुई है यूनाइटेड के वर्ल्ड में. There's been so much news, including, of course, so so Wayne Rooney के ऊपर काफी बवाल मचा है. And there's also been comments from Nicky Butt. There's also been a comment from Matthias Pogba. There's been, of course, a comment from Van Gaal, and much reports on United's managerial situation. ये managerial situation का बात जो है ये चलता रहेगा. It's going to go on till the season ends. I'd say believe nothing as of now, क्योंकि a lot of things will be made up. कचड़ पचड़ होगा. There'll be 2-3 more managers will be involved, and then eventually एक decision लिया जाएगा, which I've repeatedly said, which is already set in stone. The club have decided what they want. So अभी सिर्फ मीडिया का गेम चल रहा है. It's nothing much, nothing more than that. So let's get into it. There's a big news on Harry Kane. United are linked with him. Tottenham छोड़ना ही चाहिए. So this season he should be leaving if he realistically wants to win something. Man City, of course, will be interested because they need a striker. But a Tier 1 source, The Athletic, has said that Martial, Henderson, and Rashford, these three players will be included in a swap deal for Harry Kane. Athletic is a Tier 1 source. It does not shits around with regards to transfer rumors. Omar says no more Harry. Boys, Amar bhai, see, if it's not, sometimes it's possibly not about, I know he wants to win trophies, and it's logical that you say that if he wants to win, he shouldn't be coming here. But that's also kind of downplaying the fact that we could be in a much better shape next season. And I get it. I mean, realistically speaking, 27, 28, 29 की उम्र में आके, he would want to go to a city. He would want to go to a Real Madrid. He would want to go to any other club where he can win trophies. But it's not like we can't challenge for the domestic trophies, at least for next season, if we are going to get the manager that can sort things out. I know it's a 2-3 year process. And with Kane, I agree with your thought processes, because we'll be stuck in another loop with regards to not having a young striker up ahead. It's going to be hi Tilak bhai. It's going to be difficult. मतलब केन आएगा, फिर वो 2-3 साल 4 साल मैक्सिमम रहेगा, and then we'll have to replace him again. And I don't know if that's going to happen anytime soon. So Kane, I think, is more of a diversion. It's not going to be. It's not definitely serious. But what intrigues me about this transfer rumor is the three players that are going to be included in the swap. The Athletic says Martial, Henderson, and Rashford. I honestly, I mean, विश्वास नहीं हो रहा ये देख के कि चलो ठीक है, मार्शियल और एंडरसन तो ठीक है. Yes, Amar bhai, we can't, but we need to kind of sort a lot of things out up front too. Defense में भी है, midfield तो definitely है, एक दो signing तो चाहिए ही. But वही है कि with United it does not happen that way. So Martial, I agree with the fact that Martial को तो genuinely बेचना चाहिए, and I don't think Sevilla is going to buy him. So might as well use him as Mekure. Henderson, again, do Tottenham need a goalkeeper? Yes, Laurie is getting old. They do need a goalkeeper, but Laurie still has 2, 3, 4 years left in him, I think. And Henderson वहाँ जाके भी रखड़ेगा. So I don't see any sense in having Henderson, as a player to be given in an exchange, in a swap for Kane. Rashford is the one which is very interesting, because Tottenham could bow down to that. I mean, seeing Rashford in that list kind of थोड़ा मुझे भी शॉक लगा था कि I thought कि ये Athletic कौन से रास्ते जा रहा है? Is it going the Suns way? Because it's strange. I mean, see, I get it. Rashford is not in a good place right now, but he's United through and through. I'm not saying that I like the player because he's United through and through, but I think he'll want to develop himself better and get better next season and show what he's capable of. I mean, yes, transfer rumors uska bhi aaya that he wants a move and all that.
But if he sorts his head out and gives himself one more season, I think we still have a very good player there. Um, but but if an opportunity for Kane arises, and if United are ruthless, which I expect them to be with Rangnick, then this could happen. We could see this happen. Um, yes, Amar bhai, it is all bullshit. Now, Boran, I've been working in this for more than 4 years, and this is the worst phase of football media that I've seen. It's been 5 years, and ये जो last 4 महीने जो गोबर फैलाया ना मीडिया ने, it's the worst phase of football media in UK. I can guarantee that, and it's shitty, but it's something that needs to be addressed in one or the other way. Pratyush says, why Rashi contract talk at this time when he's struggling, letting have a strong season before starting. I agree, Pratyush bhai. But वही है ना कि यही चीज तो change करनी है. This is the one thing that we expect Rangnick to kind of hold by the scruff of the neck and say that fuck off, fuck your contract, perform, and then we go ahead with any talks. As per rumors, ये होता ही है, and at United ये culture इतने सालों से देखा ही नहीं गया है. In fact, Sir Alex Ferguson used to handle this all on his own. He was a manager, he was a coach, he was a football director, he was a whatever man. He was the soul of this club, heart and soul. एक बंदा पूरा club चलाता था. Sir Alex. And now in modern day football, you need specific positions filled, which is why the decision also takes a lot of time. ये हम fans को समझना बहुत जरूरी है, but हम समझते नहीं है. Um, Next manager Pratik Bhai will be speaking about that. Thoughts on liquidation of the club? Ayan, eventually यही होना है. If things keep, I mean, I'm genuinely being serious. This is not a joke. Liquidation, liquidation फिर भी it's far fetched. But जिस हिसाब से we kind of drain money out of the club every year, eventually we'll reach a phase where we'll have to dilute. We'll probably, I mean, कब तक चलेगा commercial arm भाई? Fan base कब तक चलाएगा? Eventually, if people like us only start giving up, if a match going audience starts giving up, the club is of no use. Commercially चलते रहता है जब तक it's going on. They are riding, the Glazers are riding on a ship that will eventually sink unless they do something to change it. I know what you mean is more of like delete club kind of a thing, but I'm genuinely speaking about the fact that we could be in dire financial circumstances too if we consistently keep missing out on top four for the next 2-3 seasons. काफी sponsors will pull out. और क्या है? हाँ, so Rashford का बात कर रहा था मैं, right? So yeah, these three players have been. I am honestly not sure whether Tottenham will be interested in this deal. Um, I mean, why would they want Marshall and Rashford both together? Henderson का चल I see, it makes some sense, but ठीक है, it's to be taken with a pinch of salt, even though it's the Athletic. कोई भी मीडिया सच्चा नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, विश्वास मत किया. स्काई स्पोर्ट्स भी नहीं. Moving on, Nicky Butt ने एक comment किया है that he wants United to go all out for Pochettino. Now his comment, I'll read it out. Listen this carefully. United needs stability. They can't keep having interim managers or learners in very powerful positions. They need people who've been there, seen it, and done it. I'd go all out to get Pochettino as a manager. He's proven in the Premier League. He's young and enthusiastic. His style of play would suit United, and his backroom staff seems switched on. I met him a couple of times at Spurs training ground and I had lunch. You'd want to play for him. Now, this is the fucking problem with people who are high on the Premier League. People who think that the Premier League is above any other league in the world. I hate this mentality. I used to be a believer of this in the last, I mean, at least 2 years back. I used to believe that Premier League is the top league in the world. It's fucking not. It's not. And these entitled English people need to understand that it's not the best league in the world. So there are other leagues who are great. Now you're talking about a Premier League experience. If अगर उसको ऐसा Premier League experience है भाई, तो वो PSG के साथ जाके फेल क्यों नहीं रहा है? Why isn't he winning titles back to back? Why isn't he in the Champions League this season? Why is he not able to make them win the trophy that they brought him to win? It doesn't matter.
He got a great squad. He built a great squad at Tottenham, but he got a great squad at PSG. He should have been at the next level. He isn't. So, Mickey, but you don't make sense to me today. Comments क्या है? Hmm, लखर्ष ने बोल दिया है. लखर्ष खुशी देता रहता है थोड़ा थोड़ा बीच में. I'll be surprised if Ten Hag isn't the next United manager. He's a clear favorite. I hope he's the favorite, to be honest. Why? Because first of all, I don't care about trophies right now. I want this team to be cleared out and brought in terms of young players and replenishing the total academy scene. Once our academy is sorted, we can balance out our transfers and bringing players out, bringing young players or giving young players a chance. And Ten Hag is the perfect guy to do that. I don't think there is any other manager in the world right now who's available who could work well with youngsters more better than Ten Hag. If you disagree, क्या ही बोलूँगा और कुछ बोल नहीं सकता. Yes, exactly, Ayan bhai. None of these people had PL experience. Yeah, it's an overrated term. हाँ शुभम भाई, we'll be talking about a lot of things with regards to Wayne. Wayne भाई भंड होके इतनी बातें करते हैं ना सर. Pratik, there are two different school of thoughts here. I think they are 100% taking Ragnick's consultancy with regards to what he said. Now I want to explain to you how the media game is going on. United is known for briefing the media. अगर इनको मतलब they are literally making a circus out of their manager search because they want engagement, they want clicks, they want to achieve their social media targets before they announce the manager. So they are looking for managers. Is ये जो बोल रहे हैं कि options है ये आ रहा है, they are interviewing this bullshit. It's all been done. It's all been decided. United का manager is decided. This year is going to be more proactive. जितना रैंगनिक बोल रहा है कि I am not involved in anything with the new with the result with regards to the new manager, he's shitting. झूठ बोल रहा हूँ. But उसका काम है वो बोलना. Because that will divert attention from his squad, his season, सब कुछ उनके players. The players will start thinking कि भाई अब next manager कौन होगा. मतलब रैंगनिक तो अभी temporary है तो why should we fucking do मेहनत है anyway. So they are using Rangnick very well. And this is the first time that the media leaks are at a minimum. जो भी आ रहा है वो क्लब से ही आ रहा है मीडिया ब्रीफिंग के तौर पे. Nothing is being leaked by insiders right now. It's just United who are playing the game with the journalists who have played this game with United a lot of times in the past. So we should appreciate that. हाँ शुभम बोलूंगा वी वांगाल अजीब ही है मतलब उसका काम देखना ही नहीं होता है उसको. Transfer market is funny. Every player costing above 100 million linked to Real Man City and PSG. Player costing 40 to 100 million. Jay, what a comment. You know why? Because Barcelona and Bayern Munich, they decide their targets 2 seasons in advance. So if they see, they literally have a team who first addresses which positions they need improvement in the next 2 years. इट्स नॉट लाइक यूनाइटेड के लास्ट 2 महीने में डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कौन सा पोजीशन चाहिए. भले ही नंगी तरीके से दिख रहा है तो हमको एक सीडीएम चाहिए, एक सीबी चाहिए, एक आरबी भी चाहिए. मतलब कितना कुछ चाहिए अपने को. आई मीन वी नीड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स बट दीज गाइज आर आर टोटली दे आर टोटली फ्री विद रिगार्ड्स टू व्हाट दे नीड. और उनका थॉट प्रोसेस भी सेट है और उनका एक स्ट्रक्चर भी सेट है. वो स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दे काइंड ऑफ गेट व्हाटएवर they can with the planning that they have. हम जाते हैं मार्केट में बहुत होशोर मचा के हल्ला गुल्ला करके और थप्पड़ खा के आते हैं बस, या तो लुट के आते हैं. सिंपल सी बात है. It's over. Tilak, it's over. If I'm not saying I'm not overhyping Ten Hag here, but if Ten Hag succeeds, uh, succeeds Pep at Man City, it's over. Then the only way we can win the league is Pep Guardiola comes to Manchester United, which will never happen. So yeah, and भाई हाँ हाँ बोलेंगे. अरे ब्रूनो फर्नांडिस सर आए ये देखो. अगर ये कोई मेरी टीम का हुआ, मैं बोल रहा हूँ थप्पड़ खाओगे तुम. मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ. ये अच्छा जेड वाला जेड लिखा है आपके हिसाब से यूनाइटेड ने
जिस मैनेजर को पॉइंट किया होगा, मेरे हिसाब से इट्स इट लुक्स लाइक टेन हैग हो चुका है, अभी सिर्फ मिल्किंग चल रहा है। आई लास्ट वीक तक there were two other managers in the race. I I think it's safe to reveal now. It was Pochettino and it was Julian Lopetegui. Pochettino came third in United's list, not first, not second. Lopetegui was second. Ten Hag was first. I think it's done. And we celebrate मत करो, but इसका बहुत बड़ा बखेड़ा बनने वाला है मीडिया में. It's going to take a lot of rumors. It's going to gain a lot of engagement, traction, और उसके बाद reveal होगा. Bhai Sahab, Pai, what a comment. I think the club has moved on to manager-driven transfer from manager-driven transfer to club. 1 मिनट केस भाई आया. हाय गाइस, कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया, आप बताओ. बस सर, बस पब्लिक से बात ही कर रहा हूँ. विगी भी आ गया है. और कुछ वैसे भी बाकी नहीं है अपने लिए. है तो सही, काफी डिस्कशन है वैसे. ऑल द मैनेजर टॉक्स एंड ऑल, बाकी तो कुछ कहाँ है. बस वही है. विघ्नेश कैसा है? मजे में, आप बताओ. केस भाई बढ़िया है. केस भाई भी बढ़िया है. बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक है उनका, बट ठीक है, परिवार वाले हैं. हम निठल्ले टेरेस पे बैठा है, हॉल पे बैठा है. So we are discussing basically the transfer window. United का केन का डिस्कशन किया है, अभी मैनेजर के डिस्कशन पे पहुंचे हैं. So it's basically वही the same thing, the media game that's going on. It's just beginning, और वो सीजन एंड तक चलता ही रहेगा. गोबर फैलाता ही रहेगा. मोदी भाई, ऐसा सिर्फ मुझे लगता है, आपको भी लगता है कि टेन हाग इज ऑलरेडी अ डन डील? इट्स डन. मैं वही बोल रहा था, आपके आने से पहले मैंने यही बोला है कि टेन हाग हो चुका है. there's no point. I mean, अगर रैंडमली जुलियन लोपेटेगी का नाम आ गया ना, मैंने तुमको जो चैट में बोला था कि लोपेटेगी वो बहुत पहले का था, राइट? आई न्यू बिकॉज देयर वाज अ ब्रीफ कमिंग फॉर 3 वीक्स इन एडवांस. हमें पता चल गया था इंटरनली कि ये ब्रीफ आएगा यूनाइटेड का, रेडी रहना. So वो मैंने ग्रुप पे तो शेयर कर दिया था, बट इधर नहीं बोल पाए थे अपन. बट it's going to be that only. यही चलता रहेगा. It's a standard procedure for the board. With United. Direct the things, keep few other players या जो भी मैनेजर कंटेंडर है वो उनका न्यूज़ लाएंगे. we'll do a round up. उनका इंटरव्यू हुआ, इसका इंटरव्यू हुआ, he is interested, वो ये प्लेयर लेके आएगा, वो सब चलता रहता है. आप लोगों को क्या लगता है ये लूक शॉ का जो कमेंट था रिसेंटली रिगार्डिंग कि यू नो फीलिंग वांटेड एंड एवरीथिंग, थोड़ा चीकी नहीं लगा? चीकी क्या लगा, उसकी गांड पे लात पड़ने वाली है ऐसा लगा. comment itself was unwanted actually. हाँ, मतलब जरूरत नहीं थी करने की. so why he said it, I don't know. अरे गोल स्कोर किया तो भी थोड़ा बहुत तो दिखाएगा ना, मतलब ऐसा. पॉगबा से ट्यूशन लिया रहेगा रे. उन सब का लगता है एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें ये लोग ऐसे टिप्स बेचते होंगे. आज आप ऐसा बोलो, आज आप वैसा बोलो. ये लाइक अननेसेसरी, मतलब यू नो क्लब पे अटेंशन आ जाता है, यू नो एक नेगेटिव वे में कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा है वैसा है. मैं वहाँ पे वांटेड फील नहीं, जस्ट बिकॉज़ यू लॉस्ट योर स्टार्टिंग प्लेस टू टेल अस यू डोंट फील वांटेड. You are afraid of fucking competition. आ जाओ मैनेजर डिस्कशन पे आ जाओ. यानी saying some people are saying we should do a manager driven transfer because they want to see the managers giving the players they want. Some want a philosophy driven approach. In that way the manager is sad, the club won't be a mess. This is exactly what City and Liverpool are right now. Do you think we should, I mean, this comes with Pochettino and Ten Hag both. I think Ten Hag has a philosophy, Pochettino has a philosophy. Do you think it's now time for us to appoint a manager who could first set things right, build a system, and then जो succession planning होगी वो भी इस system के basis पे होगी instead of manager के philosophy के basis पे? Ten Hag और Pochettino दोनों, they have a system, they have a philosophy to build their team on their likings. But the only issue with United is कि हम मतलब as a whole system, including fans, including the board, including the
media, they don't give enough time to a particular manager. Okay. We felt that Ole is trying to build something. Okay. But somehow in the third, season. I should not say this loud, but उसको रोनाल्डो दे दिया. ठीक है. Yeah. वो पूरा सिस्टम जो ही wanted to build something वो पूरा नहीं हो पाया. He could not get a defensive midfielder. तो उसका एक बहुत ही बड़ा weakness था उसकी गेम में, because due to that he could only play the counter attacking football. ठीक है. So वो defensive midfielder आप नहीं दे पाए. So the time, हम आप कितना टाइम देने के लिए अभी रेडी हो, एंड व्हाट इज योर प्रायोरिटी या व्हाट इज योर गोल, कि आपको ये 3 साल में कुछ करना है, या यू वांट टू वेट फॉर 5 months 5 years एंड देन सी दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज बिल्डिंग अप और नॉट. केस भाई हमने लास्ट समर भी सुना था बिफोर रोनाल्डो कि सोल्शायर इज प्लानिंग टू प्ले 4-3-3 with a one holder and 2 creative midfielders for the front 3 to flourish. पर वो obviously जैसा आपने कहा कि the plan was out of the window ever since Ronaldo made himself available. So kind of feel for Oli because वो इतना weak नहीं था जितना लोगों ने उसे दिखा दिया था कि tactically weak and everything. The guy with this shambolic squad finished second. I know कि the points gap was still 11 points. It's a huge one, but still we finished second, right? So give credit where it's due. I think he was on the right part until board again as usual fucked it up. But I hope from this season with Ralph in charge, things will change. Yeah, I was speaking more in terms of a structure. I'm not saying that Klopp is not included or Liverpool don't include Klopp. Of course they include Klopp, and I feel they genuinely include because they are Klopp. They are players who can play well under Klopp. वो दिख जाता है. They are Klopp. This is a Klopp player. I mean, you can see it in their personalities and the way they can conduct themselves on the pitch. So I think that comes with a freedom of transition. वो transition होना बहुत important है. Before the club understands the manager and the manager understands the club, and then they will mix each other and it goes well. So I think in this particular context, I just want to say one thing. Okay, now that Ralph is the manager till this season and we have enough time to understand all the 4 prospects. I mean, whatever names you are hearing in the recent times. Xavier का मैनेजर है, पोचेटिनो है, टेन हैग है, एंड एनरिके स्पेन का मैनेजर. So I think we are going. I am just feeling that we are going in the right direction. Saying we are taking our time to understand the process. We are taking our time to understand the system that particular manager will have. ठीक है. Concept players उसको चाहिए होंगे. ठीक है. I think if just I hope we do. If we are finishing the process of signing a new manager by April end, I'm also taking. So after that, we will have at least a month or two to decide the transfers and all. So we can also target the players in a way this particular manager wants, and that would be a good start. That would be a really good start. Yeah, absolutely. आपको नहीं लगता ये इंटरव्यू में ही थोड़ा सा डिसाइड हो गया होगा कि what kind of football or structure or philosophy he wants to bring in, plus इनमें से कितने जाएंगे और कितने रहेंगे? But it depends again, because we do not have the final amount of the transfer budget. There are few numbers like 80 million, 50 million because of UCL or non-UCL and all. But I don't think so that would be it would have been decided already कि कौन से players या कितना budget मिलेगा. That I think that they will do. Yeah. So केस भाई एंड मुदित भाई दोनों से सवाल है. Do you guys think कि ये ब्रूनो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, और आज भी हमने पढ़ा है कि रैशफोर्ड और लुक शॉ को विल बी ओपनिंग टॉक्स विद देम ओवर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. So does this suggest कि we are we already made a decision कि कौन होगा? Like let's say 80% we've decided कि यही मैनेजर होगा, and so the players are happy to stay under him. Absolutely, ये हो चुका है. I mean, it's the reason they waited for even March to come for these reports to come out is kind of strange, because January में दे देते अगर new contracts देना होता तो. It's as simple as that. या mid season में दे देते contracts, but जब अपना phase खराब चल रहा था, they could have done that and lifted our moods like this fucking club always does.
So वो भी नहीं किया उन्होंने, which makes sense. I mean, yeah, बिल्कुल So है. for me, there are two things. एक तो ब्रूनो को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना is a no-brainer. And I'm No, very, Yeah, he is absolutely. one of the performing guy who deserves the contract extension. Yeah, Now coming to Luke Shaw and what Rashford, ठीक है. Marcus Rashford. Rashford Yeah, का Rashford है कि last 6-7 months he has been terrible. I mean, injuries है out, whatever he has happened to him, जो वर्ल्ड कप के बाद हुआ था, दो अटैक, racism अटैक एंड ऑल, उसका म्यूजियल भी खराब हो गया था, वो सब किया था. सो ऑफ द ऑफ द ग्राउंड इश्यूज भी उसके साथ है, बट स्टिल आई फील रैशफोर्ड हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स जैसे आज वेन रूनी ने बोला, इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड लेड yeah, एंड he has to improve himself. करेंगे तो बात, उसका करेंगे बात. of course, of yeah. course. I'm waiting. Which he will. Yeah. So yes, उसका भी बनता है. एक ही खराब सीजन है यार, लास्ट 3-4 साल से बंदा he has been performing. ऐसा नहीं है कि he's been struggling like Martial for 5-6 years now. Yeah. And Luke Shaw का I'm not sure that we should give a contract extension. Personally, Same. ठीक है, because 8 years we have seen what 1 year maximum of a Yeah. big Luke Shaw. Yeah. So I don't think I will be happy if we are giving Luke Shaw an extension. We should rather, invest those salary wages into some other player, Yeah. some other Yeah, LB, left I back. agree. So I that agree. is my point of view in that. I agree. ये इमोशनली जो हम अटैच रहते हैं ना कुछ प्लेयर से कि नहीं यार इंजरी था, वी शुड सपोर्ट हिम, सो इसमें ही हम दब चुके हैं अंडर ऑल हक दिस, देते हैं, सो वी हक शुड देते मूव ऑन. एग्जैक्टली हक हम देते. ठीक है. आई मीन आई एग्री कि थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं एंड मतलब ह्यूमन बीइंग एंड एवरीथिंग, बट दिस हैज brought us down. आई मीन देखो आप, And सबसे apart from last season, where was Luke Shaw in the last 4-5 seasons? It was वही, pathetic. बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, चलो इग्नोर कर दो कि प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा था या इंजर्ड था, फिटनेस इश्यूज थे, बट ये क्या टाइम है करने का? जब Yeah, जब exactly. लगे पड़े हैं, सीजन खत्म हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट, हमें लीग में टॉप 4 आना है, बस एक ही और ऑब्जेक्टिव है सीजन में. ये क्या पॉजिटिविटी फैलाने का तरीका है? इधर और भी बहुत शॉट हो गया ये लोग. and this is Yeah, exactly. on the very next day when that so-called superstar player has said that he feels unwanted. Unwanted. It's a comic timing. It's a comic timing. What the Typical. That's It's typical. Yeah, so moving on भाई, ये है टॉपिक डिस्कशन का मेन, वेन फकिंग रूनी. yeah. ये भंड Wazza. भाई साहब ने भंड होके बहुत कारनामे किए हैं, और इसके कमेंट्स जो है, सी आई हेट द सन, बट समटाइम्स दीज बास्टर्ड्स गेट सच इंसेन न्यूज कहीं ना कहीं से लीक करवा के. वो यही कर सकते हैं, ओनली दिस आउटलेट कैन डू दिस शिट. यू वोंट सी एनी अदर आउटलेट इन द यूके जो एक प्राइवेट इवेंट में घुस के ये कमेंट्स निकलवा सकती है. And that is from Wayne Rooney. I mean, Yeah. the greatest English footballer. It's insane. मतलब अभी जिसने भी नहीं सुना है या देखा है, सुन लो. His first comment, according to the Sun, on Ronaldo, he said Ronaldo was so good and so fucking annoying at the same time. He's probably not as good now, but he's probably just as annoying. He would never say this comment if he's sober. Yeah. ये कमेंट पढ़ते ही मुझे लगा कि ये भंड है, इसने पी है या इसने फूका है, कुछ तो किया है. Correct. But it is to the point. It is so to the point. मतलब वो I mean, you cannot explain the relationship between Ronaldo and Rooney better than that. Yeah. एक्चुअली किसी और दूसरी दुनिया में था भाई, वो उसके मुंह से निकलता ही रहा. Next, he targeted Rio Ferdinand. Rio is a top player, but he's just arrogant. You get paid a lot of money at Man United to kick the ball into the net, so just do it. I said, do your job and give me the ball. Give Ronaldo the ball. Stop standing there messing about. Rio is a top lad, but he sometimes did forget he was a defender. यार, what the fuck is this? मतलब, dude, क्या सोच?
क्या ही सोच के कमेंट किया ऐसे. Rio knows he's a defender. Just like Yeah. Instagram filters, he was without any filter. No filter. भाई full strip किया है इसने. So just do it, बोल रहा. Do your job and give me the ball. Give Ronaldo the ball. Stop standing there messing about. Dude, Rooney, Rio. I can't imagine this happened. सोचो और क्या क्या हुआ रहेगा इस क्लब में at that time. Yeah. अरे वो प्लेन वाला कमेंट उससे भी खतरनाक है. प्लेन का कौन सा था? I don't know. मैंने नहीं नोट किया है. हाँ है अपना वो थ्रेड निकालो, उसमें है. आई थिंक लास्ट कमेंट इज दैट. वो रियो के साथ जो कुछ इंसिडेंट हुआ था वही है उसका. अच्छा, I don't know. मेरे को फिर उसके बाद टेवेस का कमेंट है मेरे पास के टॉप. टेवेस के लिए वो बोला, for 2 years I loved playing with him. I used to pick him up from his house for Champions League games and drive him to the airport. We'd play the game and come back. अबे ये क्या बेड टाइम स्टोरी तो ये सुना रहा है. And honestly, I spoke to him for 30 minutes and I had no idea what is coming out of his mouth. He is just mumbling. I am not a great speaker and I'm thinking fucking hell. He is mumbling and nothing. I was devastated. It was the biggest disappointment of my life. हंसने के अलावा क्या करे इसमें? I don't know what comment to pass. Wayne Rooney has cemented his place as a proper legend on and off the field. Like, Yeah. as a manager also. मतलब he literally gave no fucks, man. कुछ नहीं. Yeah. उसका पूरे इंटरव्यू में मुझे एक ही सीरियस कमेंट लगा, that was regarding his intention to go into management was because they want to manage us in the future one day. I think Sun ने just that people take them seriously, वो कमेंट फर्स्ट डाला. ठीक है कि धोनी wanted to go for United job. He just wants to go for United job और इसीलिए एवर्टन को मना कर दिया उन लोगों ने. And after that each and every comment it is like wild. Yeah. So I'll tell you how the Sun works. So the Sun is like एकदम ही local newspaper का भी local newspaper. So it's that on the ground. I mean, उनका ground coverage is probably best than any other news outlet in UK. और ground coverage in the sense के भले ही गोबर छापते हैं वो लोग, लेकिन उनका गोबर दिखता है. So there is an audience for that kind of a news. जितना भी हम गाली दे देते सन को, they don't give a fuck. होगा ही ना. हर एक यूनाइटेड, अरे इंग्लैंड में हर एक बंदा थोड़ी यूनाइटेड का फैन है. नहीं, अबे हर एक बंदा हर एक न्यूज आउटलेट तो डेफिनेटली है. वो तो So the Sun works in a way that they have stringers. Like stringers हर एक मीडिया आउटलेट करते हैं, but Sun के stringers are everywhere in the personal space of a footballer. हर एक फुटबॉलर अगर आउटसाइड में दिख रहा है, उसके 10, 15, 20, 25 कदम दूर एक सन का रिपोर्टर होगा ही होगा बैठा हुआ. भले ही वो रिपोर्टर जैसा माइक और वो नहीं है, बट होगा ही होगा. That's how insane they are. So they've decided कि हमें बस यही करना है. We don't give a fuck news क्या है. तुम बनाओ न्यूज, मैनचेस्टर स्काई स्पोर्ट्स, ESPN, तुम बनाओ न्यूज. We don't give a fuck. हमको बस पेलना है. That's the kind of thought process that they have. And the opportunity they take is tremendous. Well, this is not the first interview जिसमें the footballer or the person is not in the right state of mind. Yeah. Probably he ठीक है. There are so many interviews before as well. Sun में. Yeah, वो रूनी का एक और हुआ था, remember? एक बाहर फाइट हुआ था या कुछ हुआ था ड्रग करके, वो भी इन्होंने ब्रेक किया था. So it's crazy and players have literally come out, players and many media people जिन्होंने सन को अपने ट्विटर थ्रेड्स में पेला है बाद में आके कि क्या कर रहे हो हम चलो. ये क्या तरीका है? ऐसे कोई करता है क्या? So they don't give a damn. इसका भी कुछ नहीं दिया उन्होंने जवाब. Nothing. And I think there is someone very big in the legal space who protects them, which is why they keep doing it, because 100% उनके lawyers बेचते ही होंगे sanctions and lawsuits और सब कुछ. Because जिस हिसाब से उन्होंने कौन सा था वो न्यूज़ जो रैशफोर्ड का था या किसका था, which they broke, I don't know, जिसमें फिर ट्वीट करके प्लेयर ने बहुत बैंड बजाई थी 10 साल की. So रैशफोर्ड का था ना कुछ. आप म्यूट पे हो. म्यूट पे हो आप.
केएस भाई म्यूट पे हो। मैं बोल रहा हूँ रैशवर्ड का ही था एंड बिकॉज आई रिमेम्बर वो बहुत बड़ा ऐसे आया था तो ऑफ कोर्स रैशवर्ड का ही होगा वो। ये कौन अमर भाई, ये कौन है हमें नहीं पता, वी डोंट नो हिम। हाँ we don't know this person। भाई उसके भाई ने क्या आज एक कमेंट किया था कि अरे क्या छोड़ो ना, क्या मतलब इररिलेवेंट पर्सन को क्यों डिस्कस करना है भाई, लेकिन कमेंट सुनो। मतलब उस बात कर करके थक गए उसके ऊपर। Not only did I push Paul a little, it's thanks to me that he signed for United. I convinced him 100%. And look at the player he has become in Manchester. They were making him false promises. Bastard, you came as a promise to us. We didn't make any false promises to you. You were supposed to come here and become more world class than you were there at Juventus. You didn't. And it proved You that were you're not world class. That's it. you were supposed to you were supposed to help the team, not the other way around. हर विंडो में हमें ही तुझे संभालना है, हमें ही तुझे सपोर्ट करना है, संभाल के लेना है। और ये उसका भाई को मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपका खुद का करियर की लगी पड़ी है और आप दूसरे को एडवाइस दे रहे हो। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ही वाज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। वैसे भी परफॉर्मेंस तो वैसा ही दे रहा है। His biggest achievement was coming to Old Trafford and playing against his brother in a Europa League game. अरे भाई, so I think उन लोगों ने स्वैप कर दिया ब्रदर्स को भी। जब भी ऐसा एक आध मैच में पॉल आ जाता है, बाकी सब वो मैथ्यूज, क्या ऐसे नहीं ना, मैथ्यूज पोग्बा, फ्लोरेंटीन पोग्बा। हाँ फ्लोरेंटीन पोग्बा, और वैसे ही मतलब उसी को भेज देते होंगे ये लोग। रूनी का एक रोनाल्डो के बारे में भी कमेंट था ऑन हिज 2006 वर्ल्ड कप सेंडिंग ऑफ, जो रेड कार्ड मिला था उसको 2006 वर्ल्ड कप में। यस उसमें रूनी ने बोला, I had no issue with Cristiano whatsoever. I am English, he is Portuguese. When we are playing, I do not give a fuck about it. He is not my mate. But when we have finished, we are mates again. उसके बाद he started with so good and fucking annoying at the same time. It's absolutely insane क्या comment दिया है इसने। भाई पर रोनी जैसा कैरेक्टर आपको दिखेगा नहीं। रिमेम्बर जब उसने एवर्टन ज्वाइन किया था and we played them in the league, or Pogba was trying to shake his hand in the tunnel and he just refused straight away. उसके पास देखा भी नहीं उसने, he was just नीचे, he was focused and everything. Pogba का हाथ मिलाएगा भी क्यों? नहीं चाहिए। और तो क्या भाई, और तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है आज, but it's still a big day man if you consider United means managerial के इस पे बहुत ही बड़ा डे है। ये मुझे अभी भी भरोसा नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज ये इंटरनेशनल ब्रेक में ये पूरा एक्सपेक्टेड था कि 2 वीक ये लोग यही चलाने वाले। लेट्स सी, बट काफी सारे रिलायबल आउटलेट्स कमिंग आउट एंड सेइंग कि पोचेटिनो का भी रिसेंटली इंटरव्यू हो गया। सो पोचेटिनो का इंटरव्यू कितनी बार लेंगे मेरे भाई? अरे भाई, जब मीट के 5-6 राउंड हुए तो पोचेटिनो ने कम से कम ये सेगमेंट कोई कट करो, ये सेगमेंट कोई रिकॉर्ड करके कट करो। तो क्या मतलब पोचेटिनो को भी हर एक शो में सुन ना, हर एक शो में मेरी मारता ही है वो। आज मेरा मौका है। नहीं, so my point is Pochettino will get first offer in April, second offer in May 15th and third offer देखो, और फिर वो पीएसजी को बोलेगा, भाई लोग, I have my interview tomorrow, I won't be able to join. हाइट ये मुदीत भाई और केस भाई, हाइट थर्ड इंटरव्यू में पता चला कि उसका पूरा पैकेज विल बी रिव्यूड जस्ट लाइक मी। वो वहां पे बैग पैक करके बैठा होगा। राम। पोचेटिनो का बैग सब पैक करके बैठा होगा, बोलेगा यार अभी क्या करूं। नहीं भाई रहने दे, हम टेना को ले लेंगे, तू बैठ भाई। No, but I mean, day by day, or even the Pochettino fans, other Pochettino supporters, they are also seeing light for Ten Hag.
and they have started accepting See, Ten Hag as a potential candidate, basically. this is how the media plays with you. I mean, see, Yeah. I actually don't have a problem with Pochettino. No one has. No one has. I'm telling you, even me Correct. does not have a problem with Pochettino. It's just because Ten Hag सामने option है तो वो Pochettino को वो downplay कर रहे हैं. I don't think Pochettino will do a bad job here. In fact, Of course. he could do a great job. He could do a great job. वो जिता भी सकता है हमको. बट वही है कि इसकी जो टाइमिंग आई है ना PSG नॉकआउट होने की, ये बहुत गलत टाइम पे आई है. बहुत गलत टाइम पे. Yeah. और यूनाइटेड को चाहिए कि एक टॉप 4 वाला मैनेजर रहे, विच इज व्हाट बैलेंसेस पोचेटिनो's केस, यू नो, कि Yeah. एटलीस्ट ये बंदा टॉप 4 तो लेके आने का चैलेंजर तो बन ही सकता है. इफ पोचेटिनो कम्स इट विल ओनली प्रूव दैट दीज ओनर्स ओनली वांट टॉप 4, दे डोंट वांट एनीथिंग एल्स. मैं नहीं बोल रहा कि वो टाइटल्स जिता नहीं सकता. Anything above top 4 will be But bonus. this is from the point of view of the owners, Glazers. Owners, yeah, Glazers, and that's what they want. And मैं नहीं बोल रहा कि Pochettino जिता नहीं सकता. He can. He's fully capable of building a squad that can win us the title. वो हुआ तो वो Glazers के लिए bonus है. That is not their priority. Priority is top 4. Bonus is trophy. Now ऐसे में winning Pochettino makes great sense, great business sense for this club. And they won't care about what fans think. And because ऐसा भी नहीं है कि हर एक fan ही Pochettino out है. There are billions of fans who want Pochettino. ऐसा नहीं है. He's actually has quite a lot of support. He has a very good support. And secondly, जो लोग Ten Hag को support करते हैं, मतलब I mean they want Ten Hag as a manager. They don't mind Pochettino. ठीक है. Personally मेरे को ऐसा I don't have, I am indifferent whoever comes. Because दोनों का playing, see Ajax का playing style I don't think हमने इतना डिटेल में देखा हुआ है. But we have seen Spurs growing. वही. And we have to be united first. अपना fan base तो वो हो ही नहीं सकता कभी. But United should be united first. कि अंदर से कॉन्फ्रेंस क्लियर हो. जो रैंगनिक ने सेटअप किया होगा, होपफुली अब तक तो कर ही देना चाहिए. और एक सिनारियो ये भी है कि 100% रैंगनिक तो कंटिन्यू करेगा नहीं, तो नया मैनेजर तो आना ही है. अब वो जो भी आए back him Exactly. either the academy improvements, back him with one good transfer window, and back him with sales, because he wouldn't want certain players in the squad already. Yeah. You know, अगर विघ्नेश और केएस भाई अगर फॉर एग्जांपल a totally different manager comes जिसका नाम लिंक भी नहीं हुआ है, you know, अभी तक मीडिया में लिंक भी नहीं हुआ है, और अचानक से ब्रेक कर दिया कि ये मैनेजर होगा. अगर ऐसा हुआ तो इट मींस पूरा स्ट्रेटजी ऑलरेडी डिसाइडेड है कि क्या क्या करना है. Correct. In fact, we got a news as well today. They वो Juan Mata, Cavani, and third is Lingard. We are not going to give them any kind of contract extension, and that is first good step that I am saying. In years, at least हमने ऐसा देख रहे हैं. Normally क्या होता है कि Juan Mata या Lingard has denied. But this is the first time I am, this kind of news I am seeing that हम लोगों ने मना कर दिया. As a board, as a united team, we have denied कि हम लोग नहीं देंगे आपको. वो जो, and of course they don't deserve as well. वो तीनों का तो कोई मतलब नहीं होगा. Mata honestly should become a club ambassador, and correct. He deserves that. उतना respect तो दूंगा उसको मैं. बाकी दोनों को निकल लौड़े वाला सीन है बस. कवानी का तो ऐसा था कि लास्ट साल तक अपने को लग रहा था कि he चलो कुछ he is doing something, but अभी since this season he has really he has full right to feel what he feels. He's at that age जिसमें उसको अपना करियर आगे भी देखना है, और अगर उसको नहीं जम रहा तो नहीं जम रहा यार, तो क्या कर सकते हैं. नहीं, बट देन see वही बोल रहा हूँ कि वो अपना बोर्ड का गलती था कि उसको फिर वो ऐसा पुश करके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं करवाना चाहिए. नहीं पर केएस भाई तो उस वक्त प्रॉब्लम ऐसा था कि ही वाज आवर ओनली एक्सपीरियंस्ड सीनियर स्ट्राइकर इन द टीम. तब रोनाल्डो का दूर तक संबंध नहीं था, और ओले वाज थिंकिंग कि ठीक है यार इसके अंडर रैशफोर्ड और मार्शियल थोड़ा बहुत ट्रेन हो जाए, देन वी कैन थिंक अबाउट अनदर स्ट्राइकर. बट ऑल ऑफ अ सडन रोनाल्डो का अवेलेबिलिटी आ गया तो तकलीफ हो गई. नहीं वो तो that has disrupted a lot of things which none of us are ready to hear. अपना चैनल बंद हो जाएगा. नहीं ऐसा कुछ नहीं. I genuinely think at least one of these guys who are watching feels that, you know, I'm not saying he did more damage
than good for United. But we could have backed out. We could have thought, okay, ठीक है, let it go, and done something else which needed attention, which So has finished our season this already. was another moment where Alex Ferguson came in and fucked up. अरे जाने दो चाचा, नहीं सर एलेक्स के बारे में कुछ नहीं बोलने का. उसने जो करके दिया, उसने जो किया है ना इस क्लब के लिए, वो No, I'm और just 10,000 saying मिस्टेक कर ली. at the end of there are few things. Anyway, चलो वो डिस्कस नहीं करना है. Let it be. See, अगर crucial positions को आप अभी address बोला करते है हो and कि then अच्छा he is not living. Of course he won't leave. वर्ल्ड Of कप तो course he करेगा won't ही वो. leave. World But- Cup तो नहीं आएगा. लुइस एनरिके बोल रहा I know, नहीं I आएगा. know. दूसरा जो Enrique- नाम है वो है जुलियन लोपेटेगी. मंगाओ. ये होगा if talks between United and Ten Hag break down, it's going to be this guy, and then it's going to be Pochettino. मैं अभी भी बोल रहा हूँ, भले ही बात चल रहा हो, because लोपेटेगी की बात हो चुकी है ऑलरेडी यूनाइटेड से, वो बैकअप रखा है उन्होंने, और अब दे आर डिसाइडिंग बिटवीन टेन हाग एंड पोचेटिनो कि किसका मेंटालिटी मैचेस. बैकअप तो यही होगा जुलियन. So जिस I mean और एक न्यूज़ पढ़ा मैंने कि Ten Hag wants an answer as soon as possible. So that's a good sign. It's a good sign. It looks like कि उसको भी आना है. It's actually he's testing United. वो यूनाइटेड को टेस्ट कर रहा है Correct. कि तुम बताओ कि अब तुम डिसीजन कितनी जल्दी ले सकते हो. अब वो जितना प्रॉम्प्ट देखो- डिसीजन लेंगे उससे एनरिके बोल रहा हूँ, इसको कंफर्म भी हो जाएगा टेन हाग को कि हाउ विल दे बी विथ मी व्हेन आई एम एट द क्लब. देखो विघ्नेश भाई, आप अगर पूरा ऐसा सीरीज देखते हो ना, ठीक है, फर्स्ट ही गेट्स कनेक्टेड विद यूनाइटेड, फिर बिफोर पोचेटिनो वी टेक हिज इंटरव्यू, ठीक है, मतलब बिफोर पोचेटिनो. नॉर्मली ऐसा था कि पोचेटिनो वाज द फर्स्ट चॉइस, टेन हाग वाज द सेकंड चॉइस, ठीक है. बिफोर पोचेटिनो उसका इंटरव्यू होता है. उसका इंटरव्यू होने के बाद the people starting good things about Ten Hag, ठीक है, मीडिया में अच्छा चीजें आने लगता है. Suddenly our ex players and ex there are few accounts you also know, वो लोग बोलने लगता है कि Ten Hag is not a young upcoming manager, जबकि वो पोचेटिनो से 2 साल बड़ा है, ठीक है. so that negative news comes in. फिर अचानक से आता है कि Ten Hag को 2 और क्लब से भी ऑफर आ चुका है. They already spoken to those 2 clubs as well, not offer but he has spoken to the other 2 clubs as well, जिसमें एक जर्मन क्लब है and then the second one is your I think Spanish club. हाँ, ठीक है. तो ये आ रहा है और फिर आता है कि पोचेटिनो इज टेन हैग इज नॉट श्योर कि वो यूनाइटेड ने ऑफर क्यों नहीं भेजा अब तक. और आज का आपका ये व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ कि वो बोल रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी खत्म करो. सो दिस इज गोइंग इन द सेम सीरीज लाइक ऑलवेज यूनाइटेड न्यूज़ डज, ठीक है. पहले ब्रेक होगा, पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, फिर एक और बंदे, मतलब जैसे ब्रूनो के टाइम पे और एक प्लेयर का नाम आया था, फिर बोलेंगे कि भाई ब्रूनो वांट्स फिर बोलेंगे कि ब्रूनो वांट्स टू रैप अप द डील क्विकली, और वो सब आएगा. सो इट इज द सेम स्ट्रेटजी. हम लोगों सब कुछ तो जानते हो आप मीडिया के बारे में. very well put. Very well put. ये मीत इतना मेरे जॉब के पीछे पड़ा था, आप ही ले लो. फिर मीत को जॉब कौन दिलाएगा? उसका हो गया रे. So Ten Hag done deal then. क्या पता, ऐसा कुछ नहीं. केस भाई, आपको क्या लगता है डन डील? नहीं, you should have seen मुजित face right now, ठीक है. पहले बोला फिर बोले कि नहीं क्या पता. रिपोर्टर का इंट्यूशन बोल दिया. वो पहले वो अंदर से फैन का इंट्यूशन बाहर आ गया, फिर बोला नहीं सॉरी आई एम रिपोर्टर. तुम साले डिजर्व करते हो जुलियन लोपेटेगी. तुम वही डिजर्व. मुझे ऐसा है Ten Hag. Everyone watching, I don't mind you any heard here manager. first. Ten Hag is a done deal. और हमारे सोर्स है मुदीत भाई. So don't worry. अगर आपको पता चलता है later this week
या एक दो हफ्ते में कि टेन हाग है, so you know where you heard it first. And like, I'm please, I'm I'm please just like and subscribe. हाँ या ये देखो Please like प्लगइन, and ये देखो इतना बेशरम प्लगइन मैंने आज तक नहीं देखा. See guys, I am not Fabrizio Romano. I'm not tapping into anything here. Okay, so ये comment आया, United needs to build from scratch. Anyone who comes will have to dismantle everything with Ralph and build a new United. ये बहुत passionate Yeah. comment है, That's first spot of all, on, but yeah. it's definitely true. I mean, Correct. breakdown in terms of mentality, back-end stuff, squad, and facilities. क्योंकि सब Exactly, चेंज yeah. होगा. He's a very unique manager. जो भी आएगा वो यूनिक ही वाला है. पॉच भी यूनिक है और टेनहाग भी यूनिक है. तो वो हर मैनेजर को प्रोवाइड नहीं किया है इन्होंने इतने एक्सटेंड तक क्लीन अप दैट यू गेट अ क्लीन स्लेट. यू Yeah. देखो क्लीन स्लेट मिलेगा. यू हैव टू जस्ट जज योर स्क्वाड. निकालने के लिए रेडी है हम प्लेयर्स को, एंड यू गेट द प्लेयर्स यू वांट स्टार्टिंग लाइक 2-3 प्लेयर्स पर सीजन for the And next 3 seasons. fortunately or unfortunately, we have a lot of players contracts expiring soon. Yeah, Yeah. तो नहीं Yeah, चाहिए, yeah. चलो निकलो. yeah, वो Exactly. ruthless होना ही पड़ेगा. Ruthless होना ही पड़ेगा. Amar bhai, interesting comment. I don't disagree with this. Ronaldo की expectations in the dressing room and Bruno का vocality जो vocal है वो बंदा in the dressing room might have pushed some players back in confidence, but they are trained professionals, man. They are fucking footballers. I think they should be knowing how to deal with this at United, especially. Yeah. So, no, I'm not sure. ये अभी का छोड़ दो, हमने पहले भी अंडर सर एलेक्स जब द लाइक्स ऑफ बेकम, स्कोल्स, नेविल थे, तब भी हमने सुना था कि ड्रेसिंग रूम में फाइट्स होते थे प्लेयर्स के बीच में जब एक डिफीट आती थी या बैड And Sir फेस Alex चलता used था. to सो दैट्स let them. कॉमन. Sir Alex बोलता था कर लो, निकालो Exactly. frustration. So that's common. You have to deal with these issues on your own. आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते. So as a teammate अगर आप अच्छा नहीं खेल रहे हो तो I have to point it out ना. Yeah. And कोई दूसरा आके तो नहीं बताएगा. एंड अबाउट रोनाल्डो कैसा है कि उसका विनिंग मेंटालिटी है, मतलब ऑफ कोर्स ही इज अ लेजेंडरी फुटबॉलर, ठीक है, बट उसका एक स्टाइल है, ठीक है. अगर वो स्टाइल में इफ योर टीम इज नॉट एबल टू परफॉर्म तो आपको अदर आपका स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और पूरा सिस्टम चेंज होगा. अभी पूरा सिस्टम चेंज करने के लिए उस टाइम पे वी डिडंट हैव प्लेयर्स, एंड रोनाल्डो बीइंग I'm again saying this, Ronaldo being a very stubborn guy, वो अपना प्लेइंग स्टाइल नहीं चेंज करता है. उसको अगर टारगेट मैन बनना है तो वो टारगेट मैन बनेगा. सो ऑफ कोर्स उसका वो आने से अपना टीम का प्रेशर बढ़ता है, बट अगर आप प्रेशर में इफ यू डू नॉट कम आउट वेल, so what is the point of you being a professional footballer then? हाँ, exactly. Let alone being a United player, प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना भी डिजर्व नहीं करता है. Yeah. क्या कमेंट्स आ रहे हैं देख लो. अभी एक था ना लेवेंडोस्की का था, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वाह भाई, केन का बहुत ही स्ट्रांग था. सो केन होगा. एथलेटिक ऑलरेडी सेट की रिगार्डलेस ऑफ जो भी मैनेजर होगा, Kane is our number one priority in terms of striking position. We are signing two in one player ना, एक DM plus striker. DM स्ट्राइकर चाहिए. केएस भाई फॉर्म में है. DM से बॉल पिंग करेगा रोनाल्डो को. But he is a tremendous playmaker. मतलब at least in last 3-4 years I have seen it. जो जब भी उसका that tempo या उसका प्ले विथ सन, डीप ड्रॉप करके बहुत ही अच्छे पासेस करता है. क्या सन को पासेस देता है, यानी प्लेज 1-2 विथ हिम, बहुत बढ़िया करता है यार. भाई they still have to thank Pochettino for that. हाँ बट अब ये ना कमेंट में देखेगा ही नहीं, वो म्यूट कर देगा. ओके, लुइस एनरिके का कमेंट आया है जो बोल रहा था, I will be in Qatar with Spain because I have given my word, and there is nothing that makes me more excited than representing my country at the World Cup. Later we'll see. So what he's expecting the new manager to fail at United. क्या पता क्या बोलेगा, we'll see, because at least what January, I don't think.
See, we cannot wait for another year to bring a new Exactly. manager. To be very fair, Exactly. वही तो प्रॉब्लम ठीक है, है, वही तो प्रॉब्लम. because अभी already we have fucked up one season, second season हम्म, fuck up. अगर I don't think we should have the Glazers have that chance. ऑलरेडी 2 बार आप ओटी खराब कर चुके हो, आप वुडवर्ड के घर पे सब यू नो व्हाट हैज हैपेंड देयर. अभी पता नहीं ये लोग सब मैनचेस्टर यूनाइटेड अमेरिकन सपोर्टर्स जाके उसके घर पे सब बम बम मार के आ जाएंगे ये लोग, ठीक है. हम्म, सो आई डोंट थिंक दे आर टेकिंग दैट चांस कि हम एक और सीजन फकअप करें विदाउट मैनेजर या राल्फ एज ए मैनेजर, ठीक है. yeah. Because See, clearly और एक clearly this players doesn't want to play under Ralph, जो भी है, see, और एक whatever the और issue एक is. प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम ये है ना केस भाई कि अगर हम वेट कर भी लेते हैं फॉर लुइस, प्रॉब्लम ये है कि वी आर डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ द रीबिल्ड. हाँ, correct. तो I जो mean, प्रोसेस इन you're समर चालू sacrificing होनी चाहिए वो, हाँ, you're sacrificing another season, हाँ, which वही एग्जैक्टली. है won't be ना, a big deal. एक और Won't be एक a और big deal for सीजन. you. तो से ये वही बात हो गई कि नहीं दिसंबर केस तक भाई, आप राल्फ को जॉब दे दो, फिर जनवरी में लुइस आएगा, फिर वहां से रीबिल्ड चालू होगा. सो वी आर डिलेइंग दिस प्रोसेस. डजंट मेक yeah, सेंस. which is why I also moved out from that thought process. और वो rumors जो भी आया था, if he said this, which he has, it means इसका तो खत्म ही है सीन. तो अब खत्म हो वो गया. से It is I हाँ, think ये कमेंट says fullbacks we need urgently. हमारे को फ्लैंक से कोई सर्विस नहीं मिलता है, almost nothing. We overlook that aspect because of how shit our middle Harry Maguire is. We don't overlook this. मैं genuinely बोलता हूँ, हर बार अपना टीम अगर क्रॉस करता है और वो गोलकीपर के हाथ में या पीछे बाहर जाता है, मुझे गाली करने का मन करता है इस टीम को. एक क्रॉस नहीं है प्रॉपर इनका, और एक जो आता है वो कन्वर्ट नहीं होता. So do we need to get to that modern system of play where we need fullbacks who can cross, or do you think we won't invest in this position? we will I don't fill. think we'll invest. पहले मेरा सुन लो. I don't think we'll invest on any fullback. No fullback अच्छा, is coming. A CB might come. A defensive midfielder is definitely coming. A striker is coming. और कुछ नहीं होगा. see, so fullback में ऐसा है, now that Luke Shaw has, the talks have started कि Luke Shaw को हम लोग extension दे रहे. So on the left back side I don't think we are getting anyone. On the right back side अगर Van Bissaka जाता है somehow, because the performances have been bad and he is also unwanted, ठीक है, at United. Yeah. So अगर जाता है तो we might get some from youth academy. Ethan can come to the team. ये right back है Brandon. Brandon नहीं, Ethan है, lad Brandon lad है Williams है. Brandon. Yes, Brandon also can come inside because उसका भी काफी play time मिल चुका है अब तक उसको, ठीक है. So that we can do. So yes, we are not going to spend money on the fullbacks, as So Mudit do you said. think do you think this will majorly be a coaching issue rather than a transfer issue? See, That it they is could more probably of coach. इट इज मोर ऑफ अ सिस्टम इशू, ठीक है. जैसे आप अगर इसमें देखते हो, लिवरपूल में देखते हो, नहीं. अच्छा, I mean, if you're talking about preparing for next season without signing a यस, new fullback, do you think this will be यस. majorly on the coaching? के अब इनको coach करो how to cross well. सो और हाँ, ऑफ कोर्स, यस यस, because डेफिनेटली if यस, if डेफिनेटली they यस. played their careers as fullbacks, they should know how to cross. दे शुड नो टू क्रॉस. So और do you ऐसा think नहीं है that भाई कि वो आपने लोग, आपने ऐसा नहीं वान है कि वो बिसाका लोग का 19 कमेंट 19 सुना है कि यंगर डेज में ही यूज्ड टू बी अ विंगर. कैन यू बिलीव इट? no, he wasn't. उसके क्रॉसेस देख के आपको लगता है, उसको फाइनल थर्ड में देख के लगता है कि ही वाज अ विंगर. पॉसिबिलिटी नहीं है. वेलेंसिया So यूज्ड टू क्रॉस बेटर देन दैट. yeah, exactly. We all of our fullbacks actually are not world class. Yeah. All four of them are a bang average. For this season, this summer window, I don't think कोई भी fullback आएगा, left हो right हो. I don't think कोई भी आएगा. I think our priority this summer करेक्ट. is already center forward and 2 midfielders. I don't Yeah. और most उसके ऊपर कोई आया तो center back. I don't think उसके हम्म, ऊपर कोई भी transfer होने वाला. नहीं सेंटर होगा. बैक सही भी बोल रहे ओनली इन केस आपका एरिक जाता है, आपका फिल हो. एरिक जोन्स जाता है जाता तो. है, ठीक है. तो ये अंजाबे जाएगा. दोनों है जो जाएंगे तो बैकअप आई थिंक सीबीआई का. ट्वानजेबे तो 100% सेल हो रहा है, उससे कैश भी आ रहा है अपने को. और बाकी जोन्स
I think Jones will ride this out too. This guy will out Really? survive How many everyone. players? How many players? I mean, that is tremendous number. कितना बड़ा number है वो मेरे भाई. और वो भी नहीं कि खेलते खेलते हॉस्पिटल में कर दिया कमाल ही उसने. जबरदस्त. AW ये देख AWB isn't a footballer. No coaching can teach him how to be comfortable with the ball. I can't believe a 15 साल से football खेलता है, but he's so abysmal at. See, what I observe with Wan Bissaka is that वो तड़तड़ी है. तड़तड़ी समझते हो? मतलब उसको पेशेंस नहीं, उसको अंदर से घबराहट होती है जब वो फुटबॉल खेलता है कि मैं पास करूं, मैं रखूं या पास करूं, क्या करूं, रिलीज करूं, लॉन्ग बॉल डालूं, क्या करूं. वो ऐसे थॉट प्रोसेस में खेलता है. उसके पैर वो दिखाते हैं. यू कुड लिटरली पुट आउट वर्ड्स फ्रॉम हिज लेग्स कि भाई कर क्या रहा है. सो very fickle minded when he has the ball. Very fickle minded. ठीक है उसको. एंड ऐसे फिकल माइंड में he does that kind of mistakes. या तो ऐसा गंदा सा क्रॉस दे देगा, ठीक है, या तो मतलब अपने गोल के वो ऐसा गंदा सा बॉल दे देगा कि वो टेंशन में आ जाएगा कि मेरा टेंशन गया, अब तू संभाल. you don't. I mean, I'm not criticizing him. His defending is insane one on one. वो भाई कर Yes, सकता of है. He course, can of handle that. course. But उसकी किस्मत ऐसी है कि he is born in this generation where fullback role has been defined in another way. और वो नहीं कर पा रहा. वो he can't. He's पर not मुदित capable भाई of doing that. जब भी वैन का खेला है ना, आई मीन इन द रिसेंट मैचेस, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है अगेंस्ट सिटी, अगेंस्ट लिवरपूल, मतलब बड़ी बड़ी टीम के साथ हु प्लेज विद अ लॉट ऑफ प्लानिंग, कभी भी Yeah. ऐसा नहीं हुआ है कि वैन बिसाका के ऊपर सिर्फ एक बंदा हो. Hmm. ठीक है. Yeah. स्टर्लिंग के टाइम पे पेप गार्डियोला ने मिस्टेक किया था. ही केप्ट ऑन द स्टर्लिंग. तो They उसमें learned. उसने स्टर्लिंग की बराबर बजाई थी. Didn't even cross a single time that match. Yeah. बट उसके बाद Yeah. ही न्यू कि अगर ये बंदा खेलता है, इनफैक्ट कोई भी राइट बैक हो अपना, इवन डलो में भी सेम इशू है. Yeah. वो तो वन ऑन वन भी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है. तो हमेशा अपने राइट बैक पे दो बंदे होंगे, बिकॉज उनका एक बंदा, मतलब उनका एक मिडफील्डर, ही कैन हैंडल अवर टू मिडफील्डर्स. एंड Yeah. दिस इज वेयर वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज. We are lacking. वो एक पेड्री या एक फर्नांडिन्हो है, ठीक है, वो पूरा मिडफील्ड अपना ये मैक्टोमिनॉय और ये आपका फ्रेड, वो दोनों को अकेले संभाल लेगा. या फाबिनियो है, वो दोनों को अकेले संभाल लेगा. Hence, Yeah. they can have one particular mid, on the either side of the fullbacks. Makes sense. Makes sense. Totally बात. सही बात. और अगर बिल्कुल दो सही. बंदे हो गए, 2-1 होता है, तो अपने fullbacks तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया डिफेंडिंग करती है. तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. Ayan says उसकी positioning is bad, crossing bad, progressive play bad, passing bad, overlap, underlap नहीं चलता. Bad भाई quick अच्छा sense, defensive position. अच्छा फुटबॉलर सिर्फ ही नहीं रखा. फुटबॉलर ही नहीं है क्या? आयन के हिसाब से उसका सिर्फ हेयर स्टाइल अच्छा है. वान बिसाका का. Only can put in slide tackles, which I agree. I mean, I don't totally agree with Ayan, but he's speaking कुछ बात तो सही है उसमें. something is positive in the Yeah. comment. That angle भाई बोल रहे हैं, अनुराग भाई बोल रहे हैं, getting someone like Kane would make sense considering we'll be short of genuine centre forward next season, bar Ronaldo, and add to it the fact that we have people like Garnacho and his coming up. How would it make sense? I अनुराग भाई don't know. ऐसा है, देखो सबसे पहले गार्नाचो, एनिस, मैकनेल, ठीक है, मैकनेल इज द नंबर प्रॉपर नंबर 9, ठीक है, बट मेरे हिसाब से केन हैज what maximum 2-3 years left as at a peak level, because वो अर्ली, मतलब ऑन द स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर, वो 20, 21, 22, 23 ये साल में ही वाज प्लेइंग वेरी गुड. अभी भी बहुत अच्छा खेल रहा है केन, ठीक है. सो अर्ली बूमर है वो, तो अर्ली रिटायरमेंट, मतलब अर्ली डिक्लाइन भी आएगा उसका मेरे Yeah, हिसाब make no से. mistake. I would love to have Kane, but I think ऑफ कोर्स बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट नहीं है. long-term prospect नहीं है, और it will only prove that United have not changed. करेक्ट. यूनाइटेड ने चेंज ही नहीं किया है अपना माइंडसेट. उनको अभी भी स्टार्स खरीदना ही है, कुछ भी हो जाए. They don't want to build players anymore. They don't want a set strategy to. I mean, see, Kane है, bangers मारता है. He scores every season. I get it, but what will prove
that United are taking a drastic step towards building something that can be a long-term project rather than getting someone now. So there's a lot of image on this, I guess. Otherwise, they definitely go for My him only if they don't give a fuck. मेरा प्रॉब्लम यही है कि he is what close to 30 years now और 20. 30 years पे 100 million spend करना is a nonsense. I mean, It's no matter how absolutely good he insane. is, it's absolutely pathetic to spend 100 Yeah, million on a 30 yeah. million 30-year-old He, striker. ठीक है वो see, he'll still give you 20 plus goals, but doesn't make sense. उस correct. बजट में आप डार्विन नूनियज और एक मिडफील्डर ला सकते Absolutely. I love Daman, but he's speaking at a time when our youth strikers will also be looking for playing time, and again we'll have a sort of um, Greenwood like a situation. I don't think so. I think if we get Darwin, it will only increase competition for our strikers or our forward players to perform better, and get target to get to that level. Uh, it really depends. Kafi double-edged sword. प्लस आई डिड नो द पॉइंट ऐसा है कि ये मैकनील है या यूजिल है, ठीक है, दिस आर द टू सुपरस्टार्स फ्रॉम आवर यूथ एकेडमी जो दे आर अ वेरी गुड स्ट्राइकर्स. गार्नाचो प्लेस ऑन द लेफ्ट विंग, ठीक है, और एनिस, ठीक है, वो भी ही इज आल्सो अपकमिंग एज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर. बट अगेन ये सब लोगों को फर्स्ट टीम में स्टार्ट करने के लिए, आई एम नॉट सेइंग इंटीग्रेटिंग इन द टीम, बट वो स्टार्ट करने के लिए दे विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 years फ्रॉम नाउ. वो 4 साल के लिए यू नीड अ यंग स्ट्राइकर जो इनको कंपटीशन दे सके, बिकॉज फॉर 1 year यू स्टिल हैव रोनाल्डो. एंड जितना हमने राल्फ की कमेंट सुने थे ऑन द रैशवर्ड, ही इज प्लानिंग टू मेक रैशवर्ड अ मॉडर्न डे स्ट्राइकर. Yeah. बनेगा नहीं बनेगा दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, Uh, ठीक है, बिकॉज ही हैज टू उसको रूनी का वो फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट से दैट see, कमेंट आउट लाउड हियर. uh, हाँ see. I हाँ think बिंदास I बोलो. think it's going to be like an engine. जो as in यस यस कुछ चीजें बाहर जाएंगी, कुछ चीजें वापस रिटर्न आएंगी. So it's going to be like there's going to be a mixture of new players and academy players coming in. करेक्ट. So वो academy players का जो chances है, I think Ralph knows that it should come at the right time for their age. And considering what has happened with Greenwood, I think the club will be extra careful in releasing giving their young players a proper go. I think there will be times when we will see them get 2-3 games, and then they will be again sent back to their age groups to play with, and then probably brought in again for other games, for cup games and all that. And uske baad, once they touch 20 or something, they get a proper go. I mean, So maybe. so in this particular context, if you are getting Europa this the next season, ठीक है, that would be a very huge bonus for our academy players. No doubt. ठीक है, वो ऐसे रैंडम पासवर्ड टीम के साथ खेलेंगे हम लोग, जिसका नाम भी किसी को कुछ पता नहीं होगा, तो उनके वहां पे ये दिस प्लेयर कैन हैव देयर गो. And वो तो 6 है ही. मैच होते And हैं. if we are in going to Europa, we will definitely be missing out on one or two of our top targets Of course, of transfers. course, of course, So, of course, which is why I think your comment makes total sense. correct. Uh, Harry Kane, Haaland are so expensive, so Darwin Núñez will be a good business. See, ऐसा है कि yes, you are saying on the money wise, I totally agree to your point. But then this superstars, ठीक है, Haaland है, Kane है. चलो Kane though still he's coming close to 30, but Haaland is a very young striker, ठीक है, and very very lethal in the box. मतलब आप उसको 18 यार्ड बॉक्स में कहीं पे भी बॉल दोगे and he will try to score a goal, and 8 Yeah, out of 10 times he will score. yeah, And उसका जो that chemistry with Jadon Sancho, वो तो everyone has seen that. मतलब वो yeah, कहीं से भी क्रॉस करता है, हाफ लाइन से करेगा या एकदम कॉर्नर से करेगा, कहीं से भी क्रॉस करेगा, हाईलैंड विल समहाउ कम इन, मेक अ हेडर या मेक अ वॉली, कुछ भी करके वो he will शूट. So बिल्कुल. Haaland is a different thing than Another Kane thing. अभी. But yes, आप अगर प्राइस के लिए बोल रहे हो तो definitely he is very very, and of course उसका agent. So I don't think we should हाल हालांड के engage साथ engage with that.
हालांड के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो 100 मिलियन महीने आएगा, उसके लिए प्रोबेबली 150-200 मिलियन देने पड़ेंगे। और दूसरा जो वो जैसे पॉगबा के साथ उसका फैमिली, उसके ब्रदर्स आते हैं ना, हालैंड के साथ उसका पापा आएगा। बाप आएगा, मीनो रायोला आएगा, सब आएगा। भाई रायोला नहीं चाहिए भाई। नहीं चाहिए। I think हैदरा Haaland will go to Barcelona. I'm not kidding. हैदरा अच्छा Haidara apparently is a second midfield option if Garner isn't deemed to be good enough. Apparently, we would want to get another mid along with a DM. Apparently, Haidara as a choice. I definitely agree. I mean, choices बहुत है यार. There are so many choices, but वही है कि there needs to be a decision on the manager first, which is already happened or is happening, and then the manager will decide क्या चाहिए. अरे यार. happens. होता है. So, But ठीक है. but again आयन ऐसा है कि if you are seeing the recent games of the Ralph Rangnick, ठीक है, so we are playing one number 6 and 2 number 8s. कोई भी बंदा अभी नंबर 10 नहीं खेल रहा है. इवन ब्रूनो वाज प्लेइंग एज अ फ्लोटिंग नंबर 8 और वहां पे आपका फ्रेड खेल रहा था. ठीक है. सो एंड फ्रेड हैज गिवन सम वेरी गुड परफॉर्मेंसेस ऑफ लेट. सो अगर आप लेट्स से हमारे पास इतना बजट नहीं है एंड इफ वी आर गोइंग ओनली फॉर अ डिफेंसिव मिडफील्डर, दैट विल आल्सो सॉल्व काफी सारा प्रॉब्लम ऑफ आवर टीम, बिकॉज आपको वो नंबर फ्लोटिंग नंबर 8 के लिए यू विल हैव जेम्स गार्नर एज वेल. ठीक है. और ही हैज आल्सो स्कोर्ड सम बैंगर्स. अब अगर उसका गेम या उसकी टीम का गोल्स फॉलो करते हो तो आउट ऑफ द बॉक्स से उसका हिटिंग इज सुपर्ब. ठीक है. प्लस उसका फिजिकलिटी हैज इम्प्रूव्ड और उसका आपका द डिलीवरी फ्रॉम द सेट पीसेस दैट आल्सो हैज इम्प्रूव्ड. ये 2-3 चीजें हैं जो हम लोग वी आर मिसिंग इट, कंप्लीटली मिसिंग इट. Even with Bruno, even with Luke Shaw, even with Alex Telles, हम लोग कभी भी सेट पिच से कोई अच्छा बॉल डाल ही नहीं पाते हैं. I think वो कोचिंग चेंजेस में काफी इंक्लूड होगा. अगर एरिक टेन हाग या पोचेटिनो दोनों का टीम्स देख लो, कोचिंग टीम्स, आई थिंक दे आर वेरी वेल वर्स्ड इन द बेसिक्स व्हिच वी नीड टू गेट राइट. अपने बेसिक्स ही राइट नहीं होते हैं. तो बेसिक्स जब राइट होंगे, कोच इज ग्रेट एट बेसिक्स, टेन हाग इज ग्रेट एट बेसिक्स. आई डोंट माइंड एनीवन, बट वही है कि वो बेसिक्स जब राइट होगा तब एक सिस्टम बनेगा. अपने को 7 साल हुए हैं बेसिक्स राइट करते हुए. वी हैवंट गॉट बेसिक्स राइट. वो यूरोपा लीग विन कुछ भी पकड़ लो. आई एम नॉट सेइंग टाइटल विनिंग के लिए बेसिक्स राइट, बट टू बी अ फुटबॉल क्लब वो फर्स्ट स्टेप वो मैटर करता है. टू हैव अ सिस्टम यू नीड टू हैव बेसिक्स. बहुत सिंपल सा चीज है. यू जस्ट कैन नॉट गो एज अ फुल बैक. यू कैन नॉट जस्ट गो अहेड एंड स्टे देयर. यू हैव टू ट्रैक बैक. दिस आर द बेसिक्स. अब यू आर नॉट सुपरस्टार कि भाई मैं तो नहीं करूंगा. यू आर नॉट इन अ पीएसजी साइड कि नहीं मैं तो ट्रैक बैक नहीं करूंगा. ठीक है. वो बिकॉज अभी नहीं तो 2 मैच के बाद दैट वीकनेस विल कम आउट. और एक ही टीम के साथ आप 2 बार खेलते हो विद अ मैनेजर लाइक पेप गार्डियोला, मैनेजर लाइक क्लॉप, योर मैनेजर लाइक ये टूचेल. ठीक है. तो वो लोग को समझ में आता है. दे प्लान दिस थिंग्स. सो वो सब अगर बेसिक्स नहीं राइट है तो वो सिर्फ चीज नहीं चलेगा. चलो, all right. That's about it from me. Time to wrap things up. अब तक जो भी ऑनलाइन हो, जितने भी लोग देख रहे हो, थैंक यू सो मच. आप इतनी देर से हमारे साथ हो. 1-1.5 घंटा हो गया आप हमारे साथ हो. So thank you so much for being here. Thank you so much coming every night and spending so much time with us. ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो so that we can bring more and more good content to you. We'll see you every night 11:30 और 11 जो भी टाइम होगा we'll let you know. अगर you guys can बोल दो. Exactly. So if anyone who wants to be a part of the show, अगर किसी को भी अपनी मन की बात बोलनी है, if they want to say something, they want to speak their heart out, डिस्कशन करना है अच्छा सा, just drop us a DM. Instagram पे हमारा हैंडल है, Twitter पे है, जहाँ पे भी you're okay with, Gmail पे भी है. उसके सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है. So you can drop us a DM and we'll make sure you're here. So we can have a good conversation with you. जैसे कि यहाँ पे काफी लोग आ चुके हैं ऑलरेडी. सौविक है, क्षितिज है,
KS भाई है, actually वो नए नहीं है, but they've come out. So Yeah. we've given so many people debuts here. So if you want to be on here, so please let us know. और thank you so much for watching. इतनी देर से देख रहे हो तो लाइक्स शेयर सब्सक्राइब भी कर दो यार, वो घंटी बजा दो, so that you'll get the latest updates from us on every little aspect. So thank you so Yeah. much. Have a Yep. very good night and see you in the next one. Bye bye, Manoj bhai. Bye. Bye. Bye.